मैम हाथ नीचे लो, चाचा फ़ोन के लिए हाथ नीचे लो। अरे अंकल ले लूंगा तो अरे तुम्हारा फ़ोन आ रहा है अभी। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो कैमरा नहीं लगाया तुम्हारे लिए, कैमरा लगाऊंगा तो ऊपर। भाई रुक यार। Experience that Amit has put together, and we loved the entry. It was so beautiful and so experiential, and can't wait to dig in to whatever has been curated and to taste all the flavors of Kerala, and we're looking forward to it. It seems to be beautifully conceptualized also. Thank you, Nikki, for such a beautiful words. Whatever Mr. Amit Pal touches is a success. So all the best to Kerala Kitchen is all I can say. Thank you. Come. On your right. How are you? Very good. Say Yasu. Why look your center, why? After that, look here, sir. Look your right, sir. Action. Stop, thank you. मजा आ रहा है ना? Right center. Say Yasu. Say Yasu. Thank you. टनाटन तू भी आजा। Baji, एक फोटो साथ में। Baji center. Baji, इस साइड। Baji center. Say यहाँ पे। Baji look here. So you're right. Sir center. पीछे से। Sir center. Thank you. And I love Kerala food. You will laugh. Sir, solo. Solo. Baji look here. Center. बाजी यहाँ देखिए। पारुल सारा खिला। आजा। स्पेशल होने वाला है। आपने बोला केरला वाले बहुत कम फूड ट्रीज आर अराउंड नाइस क्या कहेंगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड टनाटन तो बहुत देर से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। एंड रामी जो है होटल वो मेरे घर के एकदम पास है, तो मुझे पता है कि लोगों को कितना प्यार है उस खाने से, उस जगह से। एंड यहाँ ये खुल गया है और वो भी ऑथेंटिक केरला, तो आई जस्ट लव इट। केरला इज़ अ वंडरफुल, जो उनका खाना है बहुत हेल्दी होता है। पत्तों में मिलेगा, पत्ते में मिलेगा ना? Yes, we have a Sunday. We have every Sunday will be a sadhya. अभी क्या रेकमेंड करेंगे आप इनकी Like I would recommend, like if you love Kerala food, you should come on Sunday brunch. Okay. We have a nice sadhya, properly 42 items served on a table. ओ बा और आज के लिए हमें आज क्या खाएंगे? आज कुछ ना कुछ सब कुछ ही खाएंगे। Yes, बस ये पियेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक होली का इफेक्ट चल रहा है। Thank you for coming, sir. ऑलवेज अ प्लेजर। Sir, ma'am, you're right. Hand look here. Hand center.
Tanatanto is favorite. Yeah, of course. He's Now always- Kerala Kitchen is my favorite. Sorry, I've changed my. I know you like you love South Indian food. Yeah, I love South Indian food and I love him also. And many congratulations for such a wonderful restaurant. बहुत ही अमेजिंग खाना है. मैं हमेशा से क्रेव कर रहा था कि एक अच्छा साउथ इंडियन खाना मुंबई में होना चाहिए बिकॉज आई लव साउथ इंडियन फूड. एंड अमित भाई ने मेरी वो बात सुनी. सुननी चाहिए ना, Of correct? course. Yeah, it's a beautiful place. The ambience, the food, everything is amazing, and I would suggest everybody to come and have a taste of Mr. Amit Pal's hospitality. And what is that one recommendation? I think that fried chicken, Kerala pepper chicken, Pepper which chicken, I tried. Chicken 65. Chicken 65, that was the best. And mutton also curry. mutton curry, mutton Rogan Josh. Mutton Rogan Josh, yeah. I love non-veg, so yeah. Those were my favorites. Appams also. Appam. The Your list Kerala can paratha go. is The there. list can go on. The list can go on and on. But abhi I think I'll pick my top. मैं क्या खाने वाला हूँ? मैं सब खाने वाला हूँ. जो मेन्यू में होगा सब खा जाऊंगा. आज सुबह से एकदम He's भूखा such a है. true friend today. He took off from his shoot Of course. and he's just coming only for my launch. Yeah, of course. Thank you very much. Thank Thank you you, so thank you, much. bro. Thank you. Thank you. Thank you. Sure. Thank you. नमस्कार. शिव तांडव. बोला जी तांडव. बोला जी राइट. और look here. रुको जरा भाई, एक बार देख लो पहले यहाँ पे. बोला जी. हो रहा. हाँ. बोला जी यहाँ पे. अरे रुको जरा. शिव तांडव करेंगे हम लोग आज. My favorite Kerala food, egg roast. I'm so very excited. Kerala food. And what's your favorite dish? My favorite dish, egg roast. Egg roast. Yeah. Appa verso, egg roast also. I will go. Bye. Akib.
क्या बात है माशाल्लाह बहुत हंस रहे हो हाँ? कौन है वो मैं राइट में इधर right. ये यहाँ हम लोग है ना यस यस Guys, डाउन ये देखिए ये ना इसका नो डाउन क्या बात है यस 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 सुंदर में क्या बात है फिर एक बार के सामने देखिए या बैक टू फ्रंट बुला लिया भाई बुला लिया हो गया अरे वाह भाई भाई केरला भाई यहाँ पे आइए अभी मेरा कलर नहीं गया है दीप्शिका मैम दीप्शिका मैम राइट केरला साड़ी एकदम I'm really very happy for my brother Amit. He puts really a lot of hard work in whatever brands he do, whether it is Tanatan, whether it is Rasoi, Muthuswamy, Megumi, all the brands that my brother has done. He really puts his entire hard work behind creating each and every brand that he has done. And I wish him all the best, and I already know, like I've been telling him since last 10 to 15 days, that right from day one there's gonna be rush over here outside. It's gonna go house full. The ambience that he has done, he's done a fabulous job by bringing up the brand, and obviously when it's Amit, the food quality has to be number one. Thank you very much, bro. Thank you very much. Always your supporters. Thank you. I wish him all the best, and he will definitely rock. There's no doubt about it. When friends and entrepreneurs open something in Mumbai, it's really special. And coming to our own Juhu, I'm very excited. Of course, Kerala cuisine offers something very authentic in spices, and that's something that stands out. I'm a big fan of Kerala cuisine. आज थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, इंडिया का मैच है सेमीफाइनल, और जो प्लेयर सबसे ज़्यादा शाइन किया है, आई थिंक इन द फर्स्ट इनिंग्स इज ऑल्सो फ्रॉम केरला, संजू सैमसन. सो वेरी एक्साइटेड एक्चुअली टू एंजॉय दिस cuisine, and I think best wishes to Kerala Bar and Kitchen by Tanatan to do their best and shine. I think this is a very prominent and very nice location, and I'm sure it will do well. So best of wishes to Raj Shetty ji and Amit Pal ji. Thank you. To try my vegetarian food, and best of luck, Mr. Raj Shetty. Obviously, he has great taste in whatever he opens, and we all know all the restaurants which are very famous that he owns. And so looking forward, yeah. So are you a foodie and do you like South Indian food? Yes, I am foodie. I'm half South Indian, and I can speak Malayalam. My mother is Malayali, so I'm sure I'll bring my mom as well. And I think I request all the Malayalis and all the South Indians to come and visit. आज क्या खाने वाले हो आप यहाँ पे? See, I like my sambar rice and sadhya. Basically, sadhya is vegetarian. I'm vegetarian, so I like anything vegetarian. But I would like to try. I don't know what the cuisine is. If there's something special, I would like to try. वेरी एक्साइटेड, जाकर अंदर टेस्ट करेंगे और हम आते रहेंगे यहाँ पर खाना खाने के लिए. सो गाइस, और जो भी है वो फ्लेवर जो केरला का है वो यहाँ पर आकर खाएं और एंजॉय करें. आफ्टर रमज़ान डेफिनेटली आए. तो आपने भी खाया पहले केरला का फूड? हाँ, मैंने बहुत कौन सा फूड खाया, क्या खाया? इडली, डोसा, सांबर, फिश, अप्पम. अगली बार आना तो पुष्कर भाई को भी लेके आना. हाँ, पुष्कर हम चलेंगे चेन्नई, केरला. यस, कर लेते हैं. बाय गाइस. Bye.
name says it all, Kerala Kitchen and Bar. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बेसिकली मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है. सारिया is something which I really love, especially on that केले का पत्ता, the banana leaf which they serve on. So I'm looking forward to eating it on a banana leaf अगर मुझे मिल गया. And Malabar biryani is another item that is my very favorite. And paisam is a dessert which I love to eat. So मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, जो सब लोग जानते हैं, और स्पेशली साउथ कुजीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और केरला किचन एंड बार जो बाय टनाटन ग्रुप है, जुहू में आ रहा है, मुंबई में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने साउथ में एलपी में बहुत ही यमी खाना खाया है केरला का, स्पेशली देयर अपम्स, देयर फिश फ्राई. आई लुक फॉरवर्ड टू इट, और मैं अभी अंदर जाके काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट करने वाली हूँ. मैं आप दीदी मिलेगी ना? डेफिनेटली मिलेंगी. याद रखेंगे. परफेक्ट, थैंक यू. Oh my God, Kerala kitchen. To be very honest, South Indian is my favorite cuisine altogether, and dosa is my favorite. Basically, bhat is my favorite, and whenever I tend to eat South Indian food, it's very light to digest. So I think I am a big fan of South Indian food, and I'm going to be coming here frequently. Yeah. Thank you so much. Thanks. I want to say that my connection with Kerala बहुत पहले से है. मैंने बहुत पहले प्रियदर्शन सर की एक फिल्म की थी वेटर, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था केरला में. सो केरला फूड और मेरा संबंध जो है वो बहुत पुराना है और बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू दिस न्यू रेस्टोरेंट. मेरा घर बहुत नज़दीक में है, तो मैं बहुत खुश हूँ. मैं आई थिंक हफ्ते में एक बार तो ज़रूर आऊँगी यहाँ पर. Thank you. I just love the food from Kerala, and Kerala से मेरा बहुत अच्छा एक अटैचमेंट है. मेरा पहला सॉन्ग हो गई है मोहब्बत, आलपी केरला में शूट हुआ था. So I'm going to dedicate my line. हो गई है मोहब्बत केरला से. Thank you. सर यहाँ देखिए सर. यस. Thank you. अच्छा, आप बात कर. I'm super excited क्योंकि it's Kerala kitchen and I love Kerala food. ये बहुत दिनों से I think that I was waiting for an authentic place in Mumbai to have Kerala food, and finally it's here, Kerala Kitchen and Bar by Tanate. And congratulations, Amit. Thank you. And I'm sure it's going to do very well because South Indian के बहुत सारे cuisines हैं, like तमिलनाडु के हैं, डोसाज है, इडलीज है, बेने डोसाज है, but an authentic Kerala food. कभी आपने अगर खाया है तो Kerala food is the most yummiest food. And I'm so happy and I'm excited to try all different varieties of food. And I wish a big success to my friend Raj Shetty. And I'm so happy that he's got Kerala Kitchen. Thank you very much. Thank you. Maximum satisfaction. So I would really want to wish Avatpal congratulations for your new place and new venture, Kerala Kitchen. I hope this goes good. The food is banging, the place looks nice, and I'm really looking forward to try the food here. Thank you guys. Bye. So Tanatan is my favorite. I used to love that ambience and everything. And Anna, Raj Shetty, I call Anna, and they have this Kerala kitchen, which is very interesting concept जो हमारे यहाँ है ही नहीं. And I love Kerala food. Most healthy food is Kerala food. So I'm very excited to go inside
and have all the khana and tasting and everything. I'm a huge fan, but my favorite go-to cuisine is the Kerala cuisine. I was here at the time of the soft launch a couple of days back. Beautiful place, incredible food, absolutely amazing interiors, very tastefully done, very appropriately done. It's an experience. You will have to be here to actually understand what I'm saying, but it's a beautiful experiential place. So I wish Amit all the best, and looking forward now to the formal launch here. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Ma'am, look here. Ma'am, look here, center. Ma'am, center. Ma'am, look here. Pretty ma'am, look here. Pretty ma'am, look here. Thank you. Ma'am, look here. Center. Ma'am, look here, center. Ma'am, look here. Yes, sir. Ma'am, look here. Khushi, ma'am. Center, ma'am. Khushi, ma'am, look here. Khushi, yo. Khushi, towards the camera. Oh. Thank you. Thank you. Oh yeah. Little like it. Oh yeah. This side. Look here. Guys, you wanna click in a group? Come everyone. Ma'am, look here. Thank you. Thank you so much. Thank you. Why didn't we do that? आइए मैम, मैम look here, center. Ma'am, center. Ma'am, look here. Thank you. हेमा जी आइए. भाई ट्राइपॉड मत दिलाओ. हेमा जी look here. हेमा जी. हेमा जी. हेमा on my left. हेमा जी look here. हेमा center. हेमा जी look here. Thank you. हेमा जी. हेमा जी.
Himaji, look here. Himaji, look here. इधर देखिए, इधर देखिए. अब बाइट हिमाजी बाइट. Kerala kitchen. बहुत अच्छे लगे मतलब केरला ट्रेडिशनल आउटफिट थे आप केरला किचन के बाहर ट्राई करा कर लॉन्च पे आए आज केरला का किचन बहुत कम मिलता है नॉर्थ इंडियन को क्या कहेंगे और आप कैसा खाना पसंद करते आई थिंक हर कोई साउथ इंडियन फूड पसंद करता है. यहाँ पे मैम सामने देखते यहाँ पे कैमरे में. आई थिंक हर कोई साउथ इंडियन फूड पसंद करता है, चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ के, तो पसंद करते ही हैं. मैं खुद नॉर्थ से हूँ, यूपी से हूँ, बट जब मेरा कुछ स्पेशल खाने का दिल करता है तो मैं मंगाती हूँ मैसूर मसाला डोसा. ठीक है, तो आई थिंक ये साउथ इंडियन फूड जो है ये हर कोई पसंद करता है. और फूड के साथ साथ वहाँ की फिल्में भी बहुत पसंद करते हैं. फिल्मों के साथ साथ वहाँ के आउटफिट्स भी बहुत पसंद करते हैं. तो मैं आज यहाँ पे लॉन्चिंग पे आई हूँ, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर डिनर के लिए आऊँगी या लंच के लिए आऊँगी, ब्रेकफास्ट के लिए भी आ सकती हूँ. Hello, hi. How are you? Hope like you're liking the vibes and everything. Yes, वही मैं बोल रही थी. I think everybody loves the South Indian food and South Indian attire, South Indian films also. Thank you. So Thank you for coming. Please enjoy some delicacies. Yes, What we are serving today. हिमाजी साथ में look here. हिमाजी look here. हिमाजी look here. Thank you. Chef. हिमाजी look here. अरे वाह. Thank you. Thank you. Come, you stand next to him. Yeah, sure. Come, Subir, you also come. Center. Thank you. Hope you all got something to eat because you guys are standing here from 2 hours in the heat. I told them. नहीं मिला? टनाटन कंटेंट तारा चलती है कानून से 12. Yeah, that is also my brand. क्या बात कर रहे हो? टनाटन. Yes, it's here in Shivaji Park, Dubai, everywhere. Himaji, look here. अरे इनको नहीं मिला. अरे इनको नहीं मिला. अरे मिल गया क्या? अरे नहीं मिला. No, not that way. We came to see this place and all. I think we wanted to. Right look here. क्या बात है भाई रमजान मुबारक.
राम भाई क्या कहना चाहेंगे? केरला किचन एंड बार लॉन्च हुआ है, यू आर हियर टू प्रमोट एंड सपोर्ट, क्या कहना चाहेंगे? यार केरला मुझे बहुत अच्छा लगता है, केरला का खाना भी अच्छा लगता है और केरला किचन एंड बार इज़ लाइक, मैं इधर हूँ टू सपोर्ट दिस कॉज। ये जो रेस्टोरेंट है ये अपने एक जानने वाले के है और पारुल मेरी बहन भी है, तो रमज़ान के महीने में आया कुछ खाना वाना खाता हूँ केरला का। कितना आपको पसंद है साउथ? सी साउथ फूड में कैसा अलग अलग जगह, जैसे मैंने साउथ की बहुत सारी फिल्में किया हूँ, 27 फिल्म किया हूँ, तो हैदराबाद का खाना अलग है, थोड़ा स्पाइसी रहता है, कन्नड़ा का अलग है, तमिल में अलग है, केरला में अलग है। तो केरला का कैसा है, केरला का फूड बहुत लाइट और अच्छा रहता है, मतलब पेट के लिए भी ठीक और शरीर के लिए भी ठीक, और टेस्ट बहुत अलग रहता है। सो आई बीन टू केरला सो मेनी टाइम, आई लव केरला। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ गाने वगैरह का? वो मेरी वेब सीरीज़ आ रही है एक बॉम्बे बॉन्ड, उसका बहुत जल्दी आपको पता चलेगा प्रोमो में। और दुआओं में याद रखना, रमज़ान मुबारक, अल्लाह के जिक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अंकिता जी लुक यार, अंकिता जी लुक यार, अंकिता वो यहाँ पे देखो, Come no, we'll do pictures together. वो यार आगे आगे। भाई सेंटर, अंकिता जी सेंटर। सर यहाँ पे, सर इस तरफ, अंकिता इस तरफ। Thank you very much. Thank you. I am actually very excited, and I heard they almost bought the whole thing. So this is not just कि इतने सारे restaurants रोज खुलते हैं and then some work and some doesn't work, but बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है when somebody puts so much hard work in making sure कि लोगों को खाना पसंद आए. So all my best wishes. एंड अब तो इन्होंने खरीद लिए, कोई ना कोई वजह से कभी भी नहीं निकलने वाले, एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर होम ग्राउंड. Thank you. Lots We of have good food. Tanajan also. Absolutely. वो तो हम लोग 10 years से हम जा ही रहे हैं. So all the best, a big congratulations. Thank you very much. Thank you. And look here, center. Look here. अंदर चलो कैसी लगी ना भाई? Sorry. एक से आगे मैम आगे हाँ मैम लुक हियर यो दिस साइड जस्ट ओ यो मैम चश्मा लगा के रखो मैम लुक हियर सेंटर मैम यहाँ Thank you. Sorry. Oh yeah. आइए साथ में. Look here. आ जाओ. आइए आप जाइए. Little love. Short of here. भाई थोड़ा हिस्सा लो. Yo, look here, center. Solo. Thank you. Solo. Yes, solo. Solo कर.
Ma'am, look here. Thank you so much. Thank you. Bye, look here. This side. Thank you. हाँ बस look here ma'am ma'am look here thank you ma'am Thank you. sir center थोड़ा ही है हाँ बस sir look here sir center sir center आइए मैम आइए सर Look here, sir. Look here, ma'am. Center. Ma'am, look here. He was there on Sunday, and today he's for a show in Times Square, Kolkata Times Square show. Chalo, very happy for you. Congratulations. Look here. Center. इधर देखिए Sir, look here. Sir, look here. Thank you. Ma'am, look here. Ma'am, look here. एक बार और Thank you. Thank you. Amit, many congratulations. Aaj Kerala Kitchen and Bar by Tarakan has opened in Juhu, the most prime location, and you are a pioneer in terms of food and restaurant business, especially food, I must say. How does it feel to be, in the spree of opening restaurants? I really don't have a word. This is my almost a 20th restaurant what I'm opening. First we started from the Tanatan Juhu, then Tanatan Shivaji Park, then we did in Dubai Tanatan, then we opened Muthuswamy Dadar, then Muthuswamy Khar, and the legacy was just going on. Megumi, now Kerala Kitchen and Bar. I hope I'll take this brand also multiplications. 10 years and 20 restaurants. 20 restaurants. That's a very, very big. Thank you. That's not easy, and in today's time, especially the food and beverage industry, it's not easy, and you've been just doing the roost for the longest time. How does it feel to be like I'm feeling very proud, and I feel if I do one restaurant, I give employment for 45-50 people. So I feel proud for that. And I wanted to open this place during the month of Ramadan. It's a holy month, and I said, why not? It's the best month to open it. So what is the speciality of Kerala? Speciality, the menu is very vast. We have almost when you talk about, we don't only serve Kerala food. So we'll be having a Kerala, Mangalorean, as well as Indian. So everybody will get their own taste, whatever they want to eat. Because how the restaurant works these days. You can't completely focus only on one cuisine. So we have almost 150 dishes of Kerala, 100 dishes of Mangalorean, then 40-50 dishes of Indian, North Indian dishes. I hope I'll get the same kind of love and feedback from the people, and what I got it for so many restaurants. Your recommendation for a person who loves Kerala, what You should try a mutton cutlet. You won't get mutton cutlet like that anywhere else, what we are serving, and chicken 65. It's not a Chinese 65, it's proper Kerala 65. And what is the message you'd like to give out to all the people who
I would like give a message like, you know, if you want to eat like specifically Kerala food, you should come for a Sunday brunch, which we are gonna call as in Kerala Kitchen Sadhyas, which will be having a 42 dishes and completely Kerala. In that, like, you'll see pachdi, you'll see paisam, you'll see brown rice, you'll see sambar, you'll see avial, like lot of different kind of and even the fish, mutton, chicken, everything is there. And when you talk about the breads, we have mool parathas, we have Kerala parathas, we have idi appams, we have ghee dosas, we have appam, everything. Thank you, and I wanted to be with you for all the restaurants. You were always here, always with me for opening almost every restaurant of mine. Yes. Thank you very much. Thank you, media. Like, you know, being a part of our opening. Hope, like, you know, you all also enjoyed being over here and like our hospitality, whatever we have done. Thank you very much. Thank you. Thank you.